growth of organization, we have a balanced growth of organization, we have to achieve managers objectives as well as owners objective. Getting this? So owner's objective will not be achieved till the time managers objectives are not achieved. So first managers goals have been achieved, then managers will try to achieve the organization's objectives. Okay, so by achieving both organizations goal as well as managers goals, there is a possibility of overall growth of the organization. ये हम लोगों ने देखा था, and along with this we had seen some of the constraints in the balanced growth of organization that was related to management constraint and financial constraint. Managerial constraint means what? Some of the uh, problems which create regarding to skill, efficiency, expertise and sincerity of the managers. Okay, then financial constraint related to debt ratio, liquidity ratio and retention ratio. Then we had seen the relationship between these models, how there is the relationship between growth of products and growth of capital and overall growth of the organization. Okay, then we had seen about the how the rate of diversification affect on the profit of the organization. That also we had seen, and then average profit margin. We had seen these things, that is how the total amount of profit is utilized in the organization, how much proportion it is utilized for the growth of organization, and how much proportion it is utilized which is to be distributed in the form of dividend to the shareholders. So what we had seen, if we increase the proportion of profit, to utilize this proportion of profit in the expansion activity, so what will happen? The dividend to the shareholders will be reduced. Amount of dividend which is distributed towards the shareholders will be reduced, and due to the reduction in the amount of dividend to the shareholders, what will happen? Shareholders will quit your organization. Getting this? So you can have a more number of opportunity to invest your profit into your firm, but till the time you need to understand the expectations of the shareholders. Getting this? So by dissatisfying your shareholders, you cannot increase your profit contribution, or you cannot increase profit contribution into investment. Getting this? So this, if this happens, that time there is the decline in the growth of the organization. And we had seen this graph in which towards y-axis there was the profit, towards x-axis there was the growth. Getting this? And GSO, that is GS0, GS1 and GS2, these are the growth of capital supply. These are the various trends in the capital. So in which we can slowly we can increase portion of profit towards the investment. So by increasing the profit of portion of profit towards investment, we will get three curves, that is the growth of capital supply, GS1, GS2, GSO, GS1 and GS2. And this is the curve which is here. This curve shows the growth rate of your demand. So when we add, for example, if we have total amount of profit is 1000, out of which 1500 utilized for the dividend and 500 is utilized for the growth of the organization, that time this growth rate of demand and growth rate of supply cross with each other at point L. So this is the L is the point at which you can get some of the profit. Then if you increase your growth, if you increase the production, if you increase the production capacity, and if you increase your profit investment ratio, then you will get at point M. M is the point, at this point the growth of organization is higher, where profit proportion is towards higher. If we again increase the proportion of profit towards the investment,
by ignoring the expectations of the shareholders, at that time what will happen, your shareholders will quit the organization, and what is going to happen, your profit curve, that is the sorry, your growth curve will decrease. When any organization faces the problem of capital supply, then automatically growth of organization should stop. So being an organization, what I have to do, I have to achieve the optimum profit, that is at point M. As an organization, I have to profit optimum profit at point M, where you are satisfying to your shareholders, as well as by making the satisfaction of your shareholders, you can make the investment into, that is you can use the profit margin ratio, that is the marginal utility. Getting this? So you should have to, the organization's growth is there at point M. At point E, growth is declining, and at point L, there is the still growth available, possible. So this is how the Mary's theory has been explained. So being an organization, to have a balanced growth of your organization, you should have at point M. Okay. So this was something about last theory. Now, next theory is regarding to Baumol's sales revenue maximization theory. So earlier theory में हम लोगों ने देखा कि profit maximization was the objective. Getting this? Managers uh, managers has some different objective, and firm was having some different objective. That is the profit maximization was the objective of the previous theory. Now Baumol is again economist, so who have developed this model. So in this model, he has focused on the sales or the revenue maximization. He is not saying about the profit. Okay, what Bamul says that you should have to increase your sale, and you have to keep minimum profit level. Getting this? So in this, what he says, keep this model is alternative to profit maximization model. Means nowadays you cannot maximize profit by increasing the prices of the products. So you don't have authority, or you don't have a scope to maximize your profit by increasing the selling price of your product. If you increase the selling price of your product, then what is going to happen, your customer will move towards your competitor's product, which is readily available. So what Bamul says that you need to expand your production capacity, you need to increase your sales, and by keeping profit as a minimum profit level, kitna aapko kamana hai, that you have to decide. Getting this? So you have to decide your profit target, and to achieve this profit per target, you need to increase more and more sales. आपको सेल बढ़ा के प्रॉफिट कमाना है. Means what? You have to increase your total amount of production activities, and through these production activities, you have to set minimum profit per product. Okay. तो आपको ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, क्या आपको करना पड़ेगा, ज्यादा सेल करना पड़ेगा, बिकॉज पर यूनिट प्राइस इज फिक्स्ड. Per unit price is fixed, so that by improving your sales, you can increase the profit. Okay, so that to increase your profit, you need to sell out more units. So this model is sales oriented model. This is not profit oriented model. In this model, Baumol has given the importance on sales maximization. Now see, Professor Bamul, in his books, he has published book, that is the Business Behaviors, Value and Growth, has presented managerial theory of the firm based on the sales maximization objective. Okay, he suggested sales or revenue maximization model is an alternative to the profit maximization. So this is the advanced model as compared to previous model. And in this model, he has developed two models. One is the static model and another is the dynamic model. So these are the two versions of models he has presented, and in which
In static model, he has not made the advertisement. Without advertisement, he has observed the sales of the products or the turnover of the organization. And in second dynamic model, he has done the advertisement. One is the without advertisement, that is the static model. Another is the dynamic model, in which he has done the advertisement. So ultimate objective is to maximize the sale, not to maximize the profit, because your profit level is fixed. Okay. So in Babu's model, profit level is fixed. कितना profit कमाना है? 10 करोड़ रुपीस का. 10 करोड़ रुपीस is fixed. But to increase to get this 10 crore rupees profit, how many units he have to sell? By selling maximum units. कोई भी कंपनी अगर अभी जो बोलती है ना, this company doesn't talk in terms of profit, they talks in terms of sales. मेरा टर्नओवर इतना है. कोई भी मैनेजर को जो टारगेट दिया जाता है ना, वो प्रॉफिट का नहीं दिया जाता, सेल्स का दिया जाए. इतना पॉलिसी बेचना चाहिए, इतने प्रोडक्ट्स बेचना चाहिए, इतने टैबलेट्स बेचने चाहिए, इतने क्लोथ्स बेचने चाहिए. मीन्स व्हाट? This nowadays it is not possible to organization to compare with respect to profit. That's why, because due to having a competition into the market, you cannot exploit the market. So what you can do, you can increase your sale, and by keeping minimum profit line, you can increase your profit. So per unit आपको कुछ प्रोडक्ट प्रॉफिट का कंट्रीब्यूशन सेट करना है. Getting this? And by selling one unit, you can get you can get some fixed amount of profit. तो अगर मुझे प्रॉफिट बढ़ाना है, तो definitely I have to maximize my sales. If I maximize sale, accordingly my profit will go increase. But I have to fix profit margin line. कितना टारगेट प्रॉफिट उसको बोलते हैं, कितना आपको प्रॉफिट कमाना है, that you have to fix. So Bamus prepared two models. The one is the static model, another is the dynamic model. In static model, this static model is presented without advertisement of the product, without company's advertisement. And in dynamic model, he took the help of advertisement. Okay. Now, what are the objectives of Baumol's model? So first is the maximization of sales, not to maximize the profit. You have decided, you have fixed your profit. Second, in sales maximization, what you have to do? You have to produce more. You have to produce more units by keeping low profit. If we keep profit line towards lower side, automatically what will happen? You will get the maximum sale. अगर आपने profit का proportion per unit बना raise किया या बढ़ाया, तो क्या हो जाएगा? Your sale will not going to happen. आपका sale बढ़ेगा नहीं. सेल बढ़ाने के लिए मुझे कम से कम या मिनिमम प्रॉफिट पर प्रोडक्ट से अचीव करना. ठीक है. तो मुझे एनी हाउ सेल मैक्सिमाइज करना रहेगा मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कम से कम प्रॉफिट में मुझे चार्ज करनी पड़ेगी प्रोडक्ट. एंड whatever amount you are earning through the profit, you to maximize your sales, you may take help of advertisement. आप एडवर्टीजमेंट करके मैक्सिमम यूनिट्स प्रोड्यूस करके आप मिनिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं, एक्सपेक्टेड या टारगेट प्रॉफिट कमा सकते हैं. दिस इज द ऑब्जेक्टिव. तो प्रोड्यूसिंग मोर होना चाहिए, प्रॉफिट कम होना चाहिए, और एडवर्टीजमेंट के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए. Then maximization of sales revenue is subject to the minimum profit constraint. Minimum profit constraint means what? This is the restrictions. क्या है? Minimum profit कमाना है per product से. Per product your profit line should be minimum. Then and then you can get the sales maximization. If you increase the profit per unit, to increase the profit per unit, you have to increase the selling price of your product. If you increase the selling price of product, that time what is going to happen? There will be the difference between my price and my competitor's price. Maybe my competitor's selling price will be low. So at the time of purchasing the product in the market, customer can compare my product with the competitor's product. And so that what will happen?
अल्टीमेटली माई सेल विल डिक्रीज। अगर मेरा सेल डिक्रीज हुआ तो मेरा जो मिनिमम प्रॉफिट लाइन जो मैंने डिसाइड किया दैट इज आल्सो नॉट गोइंग टू बी अचीव्ड, so there will be no growth of the organization. That's why first objective is the maximization of sales. Second, sales maximize करना है, लेकिन कैसे? By selling maximum number of units, and if required you can use the advertisement. Getting this? So when you are going to increase your max sales, at that time you have to decide the minimum profit line. Getting this? So accordingly you can adjust your prices and you can adjust your sales. Now assumptions देखिए. So पहला assumption है there is a single period time horizon for the firm. ये हम लोग first time है और first activity as a first activity हम लोग करें. We will not do this again and again and repeat it. ठीक है. So this is a single period time horizon for the firm. The firm aims at maximizing its total sales in the long run subject to the profit constant. So maximizing sales revenue is your long term objective. You are not doing for short term, for 1 month, for 2 months, for 3 months. You are not doing. Your total long run objective is to maximizing sales. हर टाइम मैंने सेल्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और इस सेल्स ऊपर ध्यान देते समय मुझे प्रॉफिट भी जाना, पर प्रोडक्ट प्रॉफिट नहीं जाना। गेटिंग दिस? बाय फॉर एग्जांपल, by selling 100 units, if you are earning 1 lakh rupees, so in spite of selling 100 units to earn 1 lakh rupees, you can sell 500 units. At that time, by selling the 500 units, again your profit level will be again 1 lakh rupees. आपको प्रॉफिट उतना ही कमाना है, लेकिन by selling number of units, ज्यादा यूनिट्स बेच के उतना ही प्रॉफिट। आपका प्रॉफिट लेवल फिक्स है। आपका प्रॉफिट लेवल कितना कमाना है एक साल में? 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख रुपीज आपको कमाना है, तो ये 1 लाख रुपीज आप 100 प्रोडक्ट्स बेच के भी कमा सकते हैं, 500 प्रोडक्ट्स बेच के भी कमा सकते हैं। अगर 500 प्रोडक्ट्स बेच के अगर आपको कमाना है तो यू हैव टू कीप सेलिंग प्राइस मोर। आपको सेलिंग प्राइस ज्यादा रखनी पड़ेगी, ठीक है। बट अगर आपको 500 प्रोडक्ट्स बेच के कमाना रहेगा तो एट दैट टाइम यू हैव स्कोप टू एडजस्ट योर प्रॉफिट। आप प्रॉफिट कम कर सकते हैं, पर यूनिट प्रॉफिट कम कर सकते हैं। तो बामूल क्या बताता है कि बाय सेलिंग आउट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यू कैन अर्न द प्रॉफिट। तो उसमें क्या है, अगर आपका सेल बढ़ता है, कोई भी कंपनी का अप्रेजल होता है, एट दैट टाइम, at the time of appraisal, the external people will look towards the turnover of the organization. What is the turnover? It is nothing but growth of your organization. They will not look towards your profit margin most of the time. They will look towards your sale कितना हो रहा है कंपनी का। अगर कंपनी का सेल अच्छा सा होता है तो there will be no shortage of capital. There will be no problem with respect to management. So each and everybody will look towards the sales of the organization. So that organization must look towards the sale. कोई भी आपको प्रॉफिट नहीं पूछेगा, हर कोई स्टेक होल्डर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन का आपको सेल बोलेगा, टर्नओवर। तो किसी भी हालत में मेरा सेल्स बढ़ना चाहिए। आई कैन कीप माई प्रॉफिट लाइन मिनिमम, बट माई सेल्स शुड बी ऑलवेज मैक्सिमाइज, एंड to maximization of sales revenue, this should be your long term objective, and you can keep constant on the profit. Okay, so this was the assumption. Then the firm's minimum profit constant is set competitively in terms of the current market values of the shares. तो मिनिमम प्रॉफिट कितना कमाना है, हाउ यू कैन डिसाइड? टू डिसाइड दिस, मुझे लोगों को डिविडेंड कितना देना चाहिए। अगर मेरा डिविडेंड ठीक ठाक है तो मेरे मार्केट प्राइस मेरे शेयर्स की अच्छी रहे। अगर मेरा डिविडेंड का रेट कम है तो उसके हिसाब से मेरे कंपनी के मार्केट प्राइस होते हैं ना, शेयर्स प्राइस, तो उसकी कीमत कम रहे। अगर मुझे लगता है कि मेरे शेयर्स की कीमत कम हो रही है, शेयर मार्केट में मेरा शेयर्स की कीमत कम हो रही है, इसका मतलब मैंने प्रॉफिट बढ़ाना चाहिए। प्रॉफिट किस लिए बढ़ाना है? Because I have to distribute the same profit in the form of dividend to the share.
तो शेयर होल्डर्स के एक्सपेक्टेशंस अंडरस्टैंडिंग करके मुझे ये मिनिमम प्रॉफिट कंस्टेंट डिसाइड करना है, मुझे कितना कमाना है। ओके, to decide this minimum profit constant, I need to understand the expectations of the shareholders. If I am not fulfilling the expectations of the shareholders, that time there will be no market growth of my shares in the stock exchange. So if I'm satisfying to my shareholders, that time it will reflect through the market price of your shares. So accordingly, you will decide the minimum profit line. Then next assumption is the firm is the oligopolistic whose cost curve are U-shaped and the demand curve is the downward slope. Oligopolistic firm means what? There are only few companies which are producing this kind of products. For example, if I am producing mobile, and oligopolistic means what? There will be only 3 to 4 companies in the market who are producing that particular such kind of mobile. Means what? Entire market is captured by only 3 to 4 firms. That is called as an oligopolistic firm. Okay, so sales maximization objective is depends upon nature of your organization, where what type of your organization is there. अगर आप oligopolistic नेचर में आते हैं, इसका मतलब ये 5 कॉम्पिटिटर छोड़ के दूसरा कॉम्पिटिटर मेरा होने वाला नहीं है। गेटिंग दिस? सो द फर्म इज oligopolistic firm हम लोग डिसाइड करेंगे whose cost curve are U shaped and demand curve is downward sloping. इसका डिमांड कर्व नीचे नीचे जाता है। क्यों नीचे नीचे जाता है? क्योंकि अगर हम लोगों ने प्राइसेस बढ़ाए तो क्या हो जाएगा? डिमांड कैन डिक्रीज। व्हाई? बिकॉज कंपटीटर विल मूव टुवर्ड्स अनदर। तो इसको बोलते हैं ओलिगोपॉलिस्टिक फर्म। जो ओलिगोपॉलिस्टिक फर्म होते हैं उसके क्या होता है? प्रॉफिट बढ़ाया तो हमारा डिमांड कम होता है, सेलिंग प्राइस बढ़ाए तो मेरा डिमांड कम हो सकती है। इस टाइप के फर्म्स वी हैव टू टेक, एंड इट्स total cost and total revenue curves are conventional type. Total cost type and total revenue type जो कर्व जाते हैं वो conventional type के कर्व है. So these are the assumptions. Okay. Now let us see first model. मैंने पहले ही बताया कि first model में क्या है? We were not considering the advertisement expenses. We are not considering the impact of advertisement. So this is the first model that is called as a static model. तो उसमें क्या किया है? तो ऑब्जेक्टिव इज सेम, दोनों में भी बामुल ने ऑब्जेक्टिव सेम रखा है कि सेल्स मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव इज देयर. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द बामुल, with the separation of ownership and control, that is the management, modern corporations, in modern corporations, managers seek prestige, higher salaries by trying to expand company sales even at the expenses of profit. तो managers are different and ownership is different, ऐसे हम लोगों ने बोला था. ठीक है, अभी मैनेजर क्या करेगा? To increase the sales. Why manager wanted to increase the sale? Because through increasing the sales, manager seeks, his own objectives are there. Manager seeks to get the prestige to him, as well as he wanted to increase the salary. तो सैलरी बढ़ाने के लिए, प्रेस्टीज बढ़ाने के लिए और उसके कुछ लग्जरियस फैसिलिटीज बढ़ाने के लिए मैनेजर क्या करेगा? सेल्स के ऊपर ध्यान देगा. Manager is going to increase the sales of the organization. If I am a manager of the organization, I will try to achieve the sales. Because अगर प्रॉफिट बढ़ा है तो प्रॉफिट का क्या करना वो ओनर का काम है. Whether it will be redistributed among the firm or whether it will be distributed in the form of dividend to the shareholders, ये किसका काम है? ओनर का काम. प्रॉफिट के मैनेजर क्या करेगा? सेल्स बढ़ाएगा. जैसे जैसे उसका सेल बढ़ेगा वैसे उसकी मैनेजर्स की प्रेस्टीज बढ़ेगी. अगर प्रेस्टीज बढ़ गई तो उसकी सैलरी भी बढ़ जाएगी. मीन्स व्हाट? देयर इज द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड द प्रेस्टीज सैलरीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और द बेनिफिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो मैनेजर क्या करेगा? मैनेजर विल लुक टू इंक्रीज द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द increase the sales of the organization. Okay. Now, being a consultant to the number of firms, Bamul observes that when asked how their business went last year, the business manager often respond that our sales were up
to $3 million. Job means what? When he took the interview of the sales manager, at that time, sales manager has focused on the sales of the organization, not on the profit of the organization. Means what? Manager is more concerned about the sales of the organization, according to BAM. Manager is not talking about the profit of the organization. Manager is having own interest about the sales of the organization. Okay. Now, thus, according to Baumol's, revenue or sales maximization rather than profit maximization is the consistent. So, manager is, most of the times, managers are considering or focusing on the sales maximization. So, this is the long-term objectives of the firm. Sales maximization is regarded as a short-term and long-term goal of the management. So, management is going to achieve maximum sales as much as possible, because on the basis of this sales maximization, managers benefits, managers salary, managers prestige, managers facilities are going to increase. So nowadays managers are looking towards maximize the sales. Okay, 1 minute. So he gives number of arguments in support of his theory. तो मैं Baumol ने क्या क्या बोला है? So these are the some of the arguments. So first argument is the a firm attaches great importance to the magnitude of sales and is much concerned about the decline. So manager will look towards the maximization of the sales. If sale is going to be decline, so accordingly manager will make some necessary adjustments with respect to the price. So he is ignoring the profit. अभी देखिए, अगर sale decline होता है, why manager is looking towards the sales of the organization? If there is the decline in sale, that time firm can face lot many problems. तो अगर sales में decline होगी, sales अगर कम हो गया, तो क्या-क्या problems कंपनी को face करना पड़ता है? First is that bankers, creditors will not provide the funds. अगर sale कम होती है, it means that there is some problems in the organization. So whoever bankers are there who are providing you loan, they will ask you for repayment, because this is the declining position of your organization. At that time, external people like creditors, banker will ask for the repayment. Creditors are the person who are supplying your goods and services on credit basis. Supplier क्या बोलेंगे? You can make our payment. We will not provide you credit because your sales is declining. Getting this? Though you are earning maximum profit by declining the sales, but they will not pay you. इसलिए आपको क्या करना है? So you again face the problem from the capital. So आपको bankers loan नहीं देंगे, creditors आपको माल उधारी पे नहीं देंगे, और दूसरा चीज, अगर if there is the decline in the sales, that time automatically shareholders will not feel better about your organization. उसको लगेगा कि यहाँ पे फ्यूचर नहीं दिखेगा. That's why they will sell out your shares. अगर shareholders start selling the shares, automatically market price of your shares will go down, though you are earning the profit. So this will be not favorable for the organization. Getting this? That's why to overcome this, manager will try to maximize sales on a regular basis. He will keep watch on the sales, daily sales, monthly sales, weekly sales, because along with the sales, there is the growth of organization is possible. So here you are not going to focus on the profit, because if there is the decline in sale, it gives the message in the market that progress of your organization is decline. इसलिए sale कभी कम नहीं होना चाहिए. Okay. Then its own distributors and dealers might stop taking the interest in it. अगर sale कम हो गया, distributor or dealer will take the franchise or take the dealership of a competitor's product. They will also don't feel the comfortability with your product. तो sale नहीं कम होना चाहिए. Consumer might not buy its product because of unpopular. अगर सेल कम हो गया तो मेरा ऑटोमेटिकली एडवर्टाइजमेंट कम होने वाला है, मेरा पब्लिसिटी कम होगी, तो पब्लिसिटी कम होने से मेरा
ऑटोमेटिकली और सेल नीचे आएगा. फर्म रिड्यूसेस इट्स मैनेजरल एंड अदर स्टाफ विद द फॉल इन सेल. अगर सेल कम हो गया तो एनी हाउ आई हैव टू make the reduction into the some of the staff. I have to give I have to make the termination of my some of the staffs and managers. I have to reduce this population, getting this, due to decline in sales. But if firm sales are large, अगर firm का sales ज्यादा होता है तो क्या होता है, there are economies of the sale and the firm expands and earn large profit. तो अगर सेल डिक्लाइन नहीं होता है, सेल डे बाय डे इंक्रीज होता है, तो ऑटोमेटिकली आपके कंपनी का पोजीशन हेल्दी हो जाएगा. फाइनेंशियल पोजीशन विल बी हेल्दी. सो बैंकर्स विल प्रोवाइड यू लोन, क्रेडिटर्स विल प्रोवाइड द मटेरियल ऑन क्रेडिट बेसिस, एंड इन मार्केट प्राइस, शेयर मार्केट में आपकी कंपनी की प्राइस बढ़ेगी. तो ये तीनों चीजें होने के लिए मुझे सेल्स किसी भी हालत में बढ़ाना चाहिए. इफ देयर इज द डिक्लाइन इन सेल, it gives the message that decline in the growth of the organization. Nobody is going to check the profit of the organization. Everybody is talking about the sales maximization. Okay. So salaries of workers and management are also depend on the large extent of more. So जितना भी ज़्यादा sale होगा, उसके हिसाब से salaries are also depend. As well as on the basis of this, management can get the bonus. Okay. So these are the arguments given by the Baumol. So in previous static model, we have not focused on the advertisement. अभी इस डायनामिक मॉडल में उसने क्या किया है, ये he took the help of the advertisement. तो ये क्या बोलता है, देखिए, this model explains how do you before going to the dynamic model, do you have any doubt regarding to the static model? Yes, if you have any doubt, you can ask me. Yes, students, do you have any doubt regarding to this? No, sir. Okay, so this is the Baumol model who is focusing on the sales. तो sales के हिसाब से जाना चाहिए, ऐसा वो बोलता है. अभी this was the static model in which they have not decided, they have not considered the advertisement. अभी देखिए, next is the dynamic model where through this dynamic model, manager is or Baumol wanted to increase the maximization, wanted to maximize the sales of the organization. अभी देखिए इसमें क्या है, here he has considered the advertisement expenditure. This model explains how changes in advertisement, यानी जैसे कि proportion of advertisement expenses done in the advertisement would affect the sales revenue of the firm under severe competition. Severe competition यानी exact competition is there in the market. ठीक है, means what? Whatever product I am manufacturing, it is close with respect to specification with respect to my competitors product. मेरा प्रोडक्ट और मेरे कॉम्पिटिटर्स ने जो प्रोडक्ट बनाया उसमें बहुत सिमिलरिटीज. देयर आर नो डिफरेंसेस बिटवीन माय प्रोडक्ट एंड माय कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट बिकॉज आई एम इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन. तो मेरे जैसा प्रोडक्ट बनाने वाले बहुत कुछ है मार्केट में, उसको बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन और सीवर कंपटीशन. Getting this? So at the time of having a severe competition, there is no scope without advertisement to sell, to maximize the sale of the advertisement. Okay. तो मेरा प्रोडक्ट जैसे बहुत कुछ कंपनियां है कि वो सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं. Now to attract my customer, to attract the customers, to maximize the sales, I have to take help of the advertisement that is given into this dynamic model. So with respect to this dynamic model, again Baumol said some of the assumptions. Okay. Now first assumption is higher advertisement expenditure would certainly increase the sales revenue of the advertisement. Means what? To increase the sales of the organization, you need to make expenditure on advertisement. So advertisement is your promotional policies. Through this advertisement, you can reach towards the maximum customers. Okay. So in this model, he has more focused on the advertisement. Then market price remains constant. आपको selling price या market price product की बढ़ाने के लिए scope नहीं है,
because you are in perfect competition. थोड़ा भी हम लोगों ने प्राइस में चेंज कर दिया तो ऑटोमेटिकली इट विल कोलैप्स माय सेल्स. थोड़ा भी हम लोगों ने प्राइसेस बढ़ाए तो क्या हो जाएगा, मेरे कस्टमर्स मेरे कॉम्पिटिटर्स के पास जाएंगे बिकॉज my competitor's product is also available in the market and which is having same features as compared to my product. मेरा प्रोडक्ट और मेरे कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट में कुछ अलग अलग फीचर्स नहीं, सिमिलर काइंड ऑफ फीचर्स आर देयर. Okay, so that in this model you don't have scope to increase the prices of production, prices of the product, so that my price remains constant. So through advertisement I need to increase the sales. Now in competitive condition, a firm in order to increase the sales revenue would go for aggressive advertising. जितना भी ज्यादा आपको प्रोडक्शन करना है उतने ज्यादा नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट्स यू हैव टू प्लेस, नंबर ऑफ एक्सपेंसेस ऑन एडवर्टीजमेंट यू हैव टू इंक्रीज. जितना ज्यादा सेल बढ़ाना है उतना ज्यादा मुझे एडवर्टीजमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए. दैट इज टोल्ड बाय द Baumol. Third assumption. Now fourth assumption, this leads to a shift in the demand curve from from left to right. अगर एडवर्टीजमेंट बढ़ाया तो इसके हिसाब से क्या होने वाला है, मेरा सेल बढ़ने वाला है. मींस व्हाट, माय सेल इज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके, तो फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व implies increased advertisement expenditure resulting to the higher sales revenue. अगर डिमांड कर्व आपका बढ़ता है, एडवर्टीजमेंट हम लोग बढ़ाते हैं तो डिमांड भी बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो हमारा सेल्स रेवेन्यू भी बढ़ेगा. दिस इज द assumption. Then a price cut may increase the sales in general. प्राइस कम किए तो सेल बढ़ेगा. विथ रिस्पेक्ट टू एडवर्टीजमेंट वी हैव स्कोप टू इंक्रीज योर सेल थ्रू द प्राइस कट, यानी प्राइस कम करने से सेल बढ़ेगा. लेकिन अगर प्राइस ऑलरेडी हम लोगों ने प्रॉफिट मार्जिन रखा है, मिनिमम प्रॉफिट लेवल वी हैव डिसाइडेड, इतना ही कमाना है, तो दैट प्रॉफिट लेवल, प्रॉफिट टारगेट वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड. दैट्स व्हाई वी डोंट हैव स्कोप टू डिक्रीज द प्रॉफिट. ओके, बट इंक्रीज इन सेल्स मेनली डिपेंड्स अपॉन whether the demand for product is elastic or inelastic. इलास्टिक डिमांड है या इनइलास्टिक डिमांड. इलास्टिक डिमांड यानी क्या है, प्राइसेस बढ़ाए डिमांड कम हो जाएगा, प्राइसेस कम किए डिमांड बढ़ेगा, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड. इट डिपेंड्स ऑन द प्राइसेस. इनइलास्टिक यानी प्राइसेस बढ़ाए डिमांड कम नहीं हुआ, प्राइसेस कम कर दिए डिमांड और भी स्टेबल है, उसको बोलते हैं इनइलास्टिक डिमांड. For example, let us take an example of some of the luxurious items. For example, GST बढ़ाया तो लोग कुछ luxurious products purchase करना कम करें, यानी there is the inverse relationship between price and your demand. और ऐसे भी हो सकते कि prices बढ़ गए डिमांड भी बढ़ेगा, prices कम किए डिमांड भी कम हो जाएगा, उसको बोलते हैं elasticity of the demand. With respect to your prices, demand can vary, that is elasticity. और inelastic demand किसको बोलते हैं, inelastic यानी क्या है कि प्राइसेस का अफेक्ट डिमांड के ऊपर होने वाला नहीं. आप प्राइसेस बढ़ाए हो आपका डिमांड उतना ही रहेगा, आप प्राइसेस कम कर दीजिए आपका डिमांड उतना ही रहेगा. फॉर एग्जांपल योर गैस सिलेंडर्स, बेसिक थिंग्स जिसके प्राइसेस बढ़ाने से आपका डिमांड कम, आपके प्रोडक्ट का डिमांड कम नहीं होगा. So it depends upon your market competitions and what type of firms are there, what nature of products you are producing. So accordingly it may happen. So these are the assumptions given by the Baumol's model in dynamic model. Okay, so we have seen first is the advertisement expenditure effect on the advertisement expenditure effect on the sales. उसके बाद second is the your price should be stable, you cannot change price day by day. Then because if you change your price, what is going to happen, your demand will increase and decrease. Then आप ऐसे competitive market में है, आपको advertisement के बिना कुछ option नहीं है, आप you can't increase your profit.
क्योंकि डिमांड कम हो जाएगा। तो मुझे सेल बढ़ाने के लिए मेरे पास तो प्रॉफिट बढ़ाने का स्कोप नहीं है, तो मैं क्या कर सकता, आई हैव टू इंक्रीज द एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। थ्रू दिस एडवर्टीजमेंट आई विल कैप्चर माय सेल्स। ओके, देन आपको अगर सेल बढ़ाना है तो व्हाट वी हैव टू डू, अब प्राइस कट में इंक्रीज द सेल्स इन द जनरल, लेकिन प्राइस कट यानी प्राइस कम करने से आपका सेल बढ़ेगा, लेकिन प्राइस तो ऑलरेडी आपने कट करके आपने प्रॉफिट का टारगेट डिसाइड किया है। ओके, एज वेल एज प्राइस कट आल्सो डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ योर प्रोडक्ट सेल। आपके प्रोडक्ट का सेल वेदर यू आर हैविंग इलास्टिक डिमांड और इनइलास्टिक डिमांड, उसके हिसाब से आपको प्राइस में वेरिएशंस करना पॉसिबल है। इलास्टिक डिमांड यानी प्राइस बढ़ाए आपका डिमांड बढ़ेगा या कम होगा, इलास्टिसिटी बोलते हैं। इनइलास्टिक यानी प्राइसेस बढ़ाए आपका डिमांड और भी स्टेबल है और भी सेम, उसको बोलते हैं इनइलास्टिक। सो इलास्टिक एंड इनइलास्टिक डिमांड के हिसाब से आपको प्राइस में वेरिएशंस करना पॉसिबल है। So these are the assumptions given by the Baumol. Now, to promote the sales, advertisement becomes an effective instrument today. आपको सेल बढ़ाना है तो आपको प्रॉफिट सेल्स बढ़ाने के लिए आपको एडवर्टीजमेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। Okay, now with an increase in the advertisement expenditure, sales of the company will go up. तो एडवर्टीजमेंट करके आपको कंपनी का सेल्स बढ़ाना चाहिए। ओके, नाउ अ सेल्स मैक्सिमाइजर would generally incur higher amount of profit, higher amount of advertisement expenditure than profit maximizer. The rate of profit or rate of advertisement, it should be higher as compared to rate of profit maximizer. So आपने so means what here you are continuously focusing on advertisement, you are continuously focusing to increase the sales, and this maximization of sale is only possible through the advertisement because you are in perfect competition market is very much perfect, and there are close substitute with your product, so you can't increase the profit per unit. If you try to increase the margin per unit profit by increasing the selling price of the product, what will happen, demand decreases immediately. So if there is the decline in demand to the product, automatically sale will decline. So it will be not affordable to you. So rather than this, what you can do, you can increase your advertisement. Okay. Then the amount allotted for the sales promotion, yani advertisement budget, should bring more proportionate increase in the sales and the total profit of the firm. जितना भी आप सेल्स प्रोपोर्शन के लिए एक्सपेंडिचर कुछ बजट बनाओगे, उसके हिसाब से आपका सेल्स बढ़ने वाला है, उसके हिसाब से आपका प्रॉफिट बढ़ने वाला है। That is the assumption. Then under oligopoly condition, as there are only a few big firms competing with each other, either producing similar or differentiated product. Oligopolistic market यानी क्या है, total market is under the control of few firms, that these few firms may be 3, 4, 5. हम 5 ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के कोई भी इसी टाइप का प्रोडक्ट नहीं बनाते, तो इसी 5 ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं, ओलिगोपॉलिस्टिक फर्म्स और ओलिगोपॉलिस्टिक कंपटीशन। कोई भी कंपटीशन होने वाली है, वो कंपटीशन सिर्फ हमारे 5 के बीच में ही होने वाला है। हम 5 छोड़ के दूसरा कोई भी कंपनी नहीं है कि जो हमारे साथ कॉम्पीट कर सके। His entire market is captured by only few firms, that is called as a oligopolistic condition or oligopolistic firms. So in oligopolistic firm, whether you are producing similar kind of products or differentiated products, means what varieties of products में क्या है, मेरा product unique है या similar product है, उसके हिसाब से मेरा profit, उसके हिसाब से मेरा sale change होने वाला है। ठीक है, I think in the previous model we have seen differentiated products किसको बोलते हैं, ठीक है। differentiated products यानी varieties of products you are producing and your product is having unique features which are not available with my competitors product. आपके कंपनी के प्रोडक्ट में, आपके प्रोडक्ट में जो फीचर्स है ना, वो फीचर्स कंपनी के, मेरे कॉम्पिटिटर के कोई भी प्रोडक्ट में नहीं।
अगर ये होता है तो इसका मतलब क्या है, इफ यू इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट दैट टाइम आल्सो कंज्यूमर हैव नो स्कोप, ही हैज टू परचेस योर प्रोडक्ट। तो ये आपको देखना है कि अगर आपका फर्म, आपकी कंपनी ओलिगोपॉली मार्केट में आती है नहीं, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में आती है, अकॉर्डिंगली यू कैन सेट योर प्रॉफिट। ओके, then this appears to be more practical in the present day scenario or situation। तो आपकी कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है, आपकी कंपनी ने कितना मार्केट, आपके प्रोडक्ट में कितना मार्केट कैप्चर किया है, that you have to decide। So these are the assumptions which are set by the Baumol's। Now look at this diagram, then I will explain you this diagram। So हम लोगों ने बोला था पहले assumption क्या था, total revenue and total cost curve are the traditional, यानी regular curves। So TR is the curve of total revenue, TC stands for total cost, and here profit so this is the total one। यहाँ पे देखिए, on x axis I have taken output, on y axis I have taken that is total cost, total revenue curve and total profit of the organization। And यहाँ पे देखिए मैंने एक रेड लाइन हॉरिजॉन्टल x एक्सिस को एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाला है, that is called as a minimum profit line। यानी in this case you have set your profit, every company has to set the profit line, कितना कमाना है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अबाउट, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज इज द प्रॉफिट आपको किसी भी हालत में एक साल में कमाना है। ये एक साल में 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाना है, तो व्हाट यू कैन डू, आइदर बाय इंक्रीजिंग योर पर यूनिट प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस बढ़ा के आप 1 लाख रुपीज अचीव कर सकते हैं, बट दिस विल बी फॉर शॉर्ट टर्म पर्पस। बीच में क्या हो जाए, अगर आपने प्राइसेस बहुत बढ़ाए, कंपनी के सेलिंग प्राइस, प्रोडक्ट की अगर सेलिंग प्राइस बढ़ाए, तो यू कैन अचीव ओनली शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। अगर मेरे कॉम्पिटिटर्स में प्राइस कम करने के बाद क्या हो जाएगा, माय कस्टमर विल मूव टुवर्ड्स माय कॉम्पिटिटर, सो इट विल बी नॉट योर लॉन्ग टर्म पर्पस। तो अगर लॉन्ग टर्म पर्पस में मुझे सेल्स मैक्सिमाइज करना है, तो इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज नॉट योर ऑब्जेक्टिव और यू शुड नॉट सेट दिस ऑब्जेक्टिव। आपको क्या करना है, मुझे सेल्स मैक्सिमाइज करने के लिए आई हैव टू कीप स्टेडी प्रॉफिट लाइन। ये जो लाइन यहाँ पे दिख रही है ना, ये वाला लाइन मिनिमम प्रॉफिट लाइन आई हैव टू सेट इन एडवांस। मुझे कितना प्रॉफिट कमाना है, कितना प्रॉफिट का टारगेट है, दैट आई हैव टू फिक्स इन द एडवांस। तो उसको बोलते हैं मिनिमम प्रॉफिट लाइन। इट इज स्टेडी अक्रॉस योर आउटपुट। आप x एक्सिस पे आपका आउटपुट बढ़ाएंगे, आउटपुट यानी प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन योर आउटपुट लाइन इज आल्सो फिक्स। आपका ये आपका प्रॉफिट लाइन भी फिक्स है। ओके, सो सी हियर ऑन y axis you have taken total cost, total revenue and profit। अभी देखिए ऑन y axis यहाँ पे देखिए TR stands for total revenue curve। Look at the nature of this TR curve। total revenue curve देखिए, पहले डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखाता है अप टू R1 R2 तक जाने के बाद वो क्या करता है, फिर इट गोज टुवर्ड्स द डिक्लाइनिंग साइड। अप टू सर्टेन लेवल, अप टू नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो अप टू नंबर ऑफ यूनिट्स योर टोटल रेवेन्यू कर्व इज गोइंग अपवर्ड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल DAB और C तक क्या होता है, आउटपुट जैसे भी मैं मेरा आउटपुट बढ़ाऊंगा फ्रॉम D to C, तो मेरा टोटल रेवेन्यू कर्व इज हैविंग इंक्रीजिंग ट्रेंड। व्हेन माय आउटपुट नंबर ऑफ यूनिट्स व्हिच आई प्रोड्यूस अप टू C, up to this my profit, my total revenue is increasing। when I cross the threshold limit of C से ज्यादा अगर मैं प्रोडक्शन करता हूं तो मेरा टोटल रेवेन्यू कर्व नीचे आता है। so this C is the point, optimal point of production, and R2 is the optimal point of my revenue। उससे ज्यादा अगर मैंने प्रोडक्शन किया तो मेरा रेवेन्यू कम होने वाला है।
So this is something about total revenue. Now let us look towards the TC curve. TC stands for your total cost curve. In case of your total cost curve, your total cost curve is also increasing with respect to your revenue. Revenue अगर बढ़ता है इसका मतलब आपका सेल बढ़ता है, and with respect to your sale, your total cost is increasing. The way in which your total revenue curves are there, in the same manner your total cost curve is also increasing. जिस हिसाब से मेरा सेल्स रेवेन्यू बढ़ता है उसके हिसाब से उसी ट्रेंड से मेरा कॉस्ट बढ़ता है. कहां तक बढ़ता है देखिए. नाउ इन दिस पॉइंट, सी at this point your total revenue curve and total cost curve are crossing with each other. Okay, at this point your total revenue curve is declining, but your total cost curve is not declining up to this point, up to R2 तक क्या हुआ है, मेरा रेवेन्यू बढ़ता मेरा रेवेन्यू बढ़ता गया, उसके बाद मेरा कॉस्ट भी बढ़ती गई, उसके बाद there is the decline in total revenue but there is no decline in the total cost. मेरा रेवेन्यू या मेरा सेल्स डिक्लाइन हो रहा है और मेरा कॉस्ट बढ़ते जा रहा है. With respect to your revenue, my cost is not declining. Okay, so that due to these things there is the intersection between total revenue curve and total cost curve. This is not affordable to the organization. So this is the behavioral trend of total revenue curve and total cost curve. Now what about your profit? आपका रेवेन्यू बढ़ता है, कॉस्ट बढ़ता है, कम होता है, तो उसके हिसाब से मेरा प्रॉफिट में क्या हो रहा है देखिए. नाउ दिस इज द मिडल कर्व. ये जो यहाँ पे मिडल कर्व जो दिखता है ना, यहाँ पे देखिए 1 मिनट. So this is my profit curve. So look at my profit curve. ये जो ये वाला प्रॉफिट कर्व जा रहा है ना, ये प्रॉफिट कर्व it is going to this point and after that this profit curve is declining in this way here. Okay, now look at this here. If you increase your revenue, along with your revenue and along with your cost, my profit is also increasing. And at this point, so this was the minimum profit line was, for example, यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने प्रॉफिट 100 रुपीज का डिसाइड किया है. I have set the profit target of 100 rupees. 1 minute. Okay, now see here, I have set profit target of 100 rupees over here. Sorry. हाँ, यहाँ पे देखिए मैंने प्रॉफिट टारगेट मिनिमम प्रॉफिट लाइन 100 रुपीज का रखा था. सो उसके हिसाब से यहाँ पे क्या हुआ, when I increase my sales revenue and when I increase along with this my total cost is increasing, and with the same manner my total revenue is also increasing up to this. So this is the point at which I have crossed my profit line. So D is the point. D stands for your number of production. So for example, this at D we are producing 100, for example 10 units. तो 10 यूनिट्स बेच के हम लोग क्या कर सकते हैं, मेरा मिनिमम प्रॉफिट लाइन अचीव कर सकते हैं. उसके बाद 10 से ज्यादा अगर 20 यूनिट बनाया मैंने at point A I am producing 20 units, but at that time what is my profit level, it is up to H, means my profit is more than my profit target. At point H I am increasing, I am generating more profit than my target level. अभी देखिए, when I reach towards at point H and again I am producing extra product up to B, अगर मैं उसके हिसाब से क्या करता, मैं A छोड़ के यहाँ पे 20 यूनिट्स थे, अभी B के जगह पे मैंने 30 यूनिट्स बनाए. तो 30 यूनिट्स, if I produce 30 units at that time, look at the revenue, my total revenue will be up to R1. मेरा रेवेन्यू बढ़ेगा, गेटिंग दिस, उसके हिसाब से मेरी कॉस्ट भी बढ़ेगी.
गेटिंग दिस, बट माई प्रॉफिट इज डिक्लाइनिंग, यहाँ पे मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है. ओके, माई प्रॉफिट इज डिक्लाइनिंग एंड इट इज कमिंग टूवर्ड्स माई मिनिमम प्रॉफिट लाइन. समझ में, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. मेरा ए जो पॉइंट है, एट पॉइंट ए my profit is highest, which is more than my target line. Getting this? So here, how many units I have produced? For example, 20 units at A. If I produce 30 units at B, if I produce 30 units at B, at that time what will happen? My total revenue can increase. Along with this revenue, what is going to happen? My total cost may also increase. But at that time, my profit decreases up to minimum point E. So E was your target point. तो E के जगह पे मैं क्या हो जाएगा, मेरा सेल बढ़ेगा, मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन मेरा जो डिसाइडेड प्रॉफिट लाइन था वो उसके मैं बॉर्डर पे आऊंगा. ओके, नाउ उसके बाद दैट वाज नंबर ऑफ यूनिट्स वाज फॉर एग्जांपल 30. अगर हम लोगों ने और 50 प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल एट वी केम नाउ एट पॉइंट सी के जगह पे हम लोग आ गए, तो सी में पहले हम लोगों ने 30 प्रोडक्ट्स पे थे, अभी मैंने आउटपुट बढ़ाया 50 किया. तो इफ आई इंक्रीज माय नंबर ऑफ आउटपुट अप टू 50, तो 50 यूनिट्स बना के क्या हो जाएगा, मेरा R2 बढ़ेगा, R2 यानी रेवेन्यू बढ़ेगा. विथ रिस्पेक्ट टू रेवेन्यू मेरा टोटल कॉस्ट भी बढ़ेगी, लेकिन देखो मेरा प्रॉफिट लाइन कितना आया. सो नाउ एट पॉइंट C, we are at point G. तो नंबर मेरा प्रॉफिट लाइन किधर आया है, G पे आया. तो G is my profit, which is less than my targeted profit. इसका मतलब मैं नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा बनाता हूँ, लेकिन मेरा प्रॉफिट टारगेट से नीचे आ रहा है. मीन्स व्हाट, दिस प्रोडक्शन विल बी नॉट ऑप्टिमम प्रोडक्शन. तो आपको ऑप्टिमम प्रोडक्शन लेवल कितना रखना है, दैट ऑप्टिमम प्रोडक्शन लेवल is at point B. पॉइंट B इतना होना चाहिए, उसमें क्या है, आपको रेवेन्यू भी ज्यादा मिलेगा, आपका सेल्स भी बढ़ेगा, आपका प्रॉफिट लाइन पे भी रहोगे आप यहाँ पे, और अकॉर्डिंगली यू कैन सेट द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स. सो यू कांट ग्रो बियॉन्ड द B पॉइंट, यू कांट मूव फ्रॉम B टू C. ठीक है, तो आपको इसी के दौरान D पोजिशन इज ऑल्सो favorable to you, but you due to this B position you can't increase your sale. प्रॉफिट ज्यादा है, प्रॉफिट टारगेट कवर कर रहा है, लेकिन आपका सेल नहीं बढ़ रहा है. उसके बाद ए पॉइंट पे देखिए, आपका प्रॉफिट टारगेट से भी ज्यादा है, लेकिन सेल्स कम है. लुक टुवर्ड्स दिस पॉइंट यहाँ पे. तो योर सेल इज नॉट इंक्रीजिंग, योर प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग बट योर सेल इज नॉट इंक्रीजिंग. एंड प्रॉफिट अगर इसी तरीके से बढ़ाना है तो क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म में आपको फायदा है, सॉरी शॉर्ट टर्म में आपको फायदा है, लॉन्ग टर्म में फायदा नहीं है. तो फॉर दैट पर्पस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इंक्रीज योर आउटपुट. आपका आउटपुट कितना बढ़ाना है, अप टू R1 पॉइंट यू हैव टू इंक्रीज योर आउटपुट. ओके, सो दिस इज समथिंग, एंड यू कांट गो बियॉन्ड द पॉइंट बी के आगे नहीं जाना है, क्योंकि आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, टोटल कॉस्ट बढ़ेगी, लेकिन प्रॉफिट आपका टारगेट से भी नीचे आएगा. दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस बामोल मॉडल. ओके, so we have finished our time, so let us stop here. Okay, so if you have any kind of difficulty in the next lecture, we can also keep some focus on this same model. Okay, next lecture को भी हम लोग इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं, क्योंकि we have, due to the limit of time, we have to finish the lecture. You may have another lecture. Okay, thank you so much. next lecture को फिर एक बार हम लोग इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे. Thank you so much. Thank you, sir.